Hi all. We are continuing with our series of solving the Cmat 2022 paper, and today we'll be solving the LR section of Cmat 2022 paper. So let's begin. So coming to the first question of LR section. So the first question majorly talks about the assumption and statement question, wherein you are given with a statement and two assumption. You have to find out whether the assumptions are implicit or not. So the statement is the government has decided to relocate all the brick kilns away from the city. Assumption one states that the pollution in the city is being caused only because of the brick kiln in the city. So the assumption one not look like a correct assumption because of the primary word only. The thing that only makes this assumption is the extreme statement. So खाली एक ही रीजन नहीं है ड्यू टू विच गवर्नमेंट इज relocating, and that too is caused only by brick kilns. So this is ruled out. Moving to assumption 2. So workers shall be able to travel daily to the new site of brick kilns. So yes, this assumption is making sense because when we talk about relocating something from away from the city, so फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू माइंड इज दैट कंपनी तो बंद नहीं करनी, तो क्या वर्कर जा सकते हैं? सो क्या डेली ऑपरेशन रन होगा? सो द आंसर ऑफ दिस would come as yes. So as a result of which assumption 2 is correct. So option B is our right answer. Moving to the next question. So each of the five balls such as red, blue, yellow, black, green is of different weight, and ब्लैक इज हेवियर देन रेड. सो यहाँ पे हमें उनकी सॉर्टिंग करनी है इन टर्म्स ऑफ देयर वेट. सो व्हाट आई विल डू इज जो सबसे ज्यादा हैवी है आई विल पुट इट एज द फर्स्ट, देन सबसे जो लाइटेस्ट है दैट वुड बी लास्ट. सो ब्लैक इज हेवियर देन रेड एंड येलो. सो ब्लैक इज heavier. Wait a minute. Yes. Black is heavier than red and yellow. Sorry, red and blue. Then yellow is lighter than red ball. So definitely रेड के नीचे आएगा येलो. वी आर नॉट श्योर अबाउट ब्लू. ब्लू बॉल इज हेवियर देन रेड एंड ग्रीन बॉल. सो ब्लू इज हेवियर देन रेड, सो डेफिनेटली ब्लू यहाँ पे आएगा. ब्लू इज हेवियर देन रेड. So we have got the fourth thing, but third वाले statement made is saying blue is heavier than the red and green balls. So red से ऊपर है, that is for sure, but green का कोई सिनेरियो अपने को क्लियर नहीं है कि ग्रीन कहाँ पे होने वाला है. सो ग्रीन green could be here or green could be here as well. So green का सिनेरियो क्लियर नहीं है, so for that reason we'll go with option number B. So option B is our right answer. Moving to the next question, that is question number 3. So in a college of 200 students are randomly chosen. 140 like tea and 120 like coffee. 70 like both each like tea and coffee. How many like neither tea nor coffee? Cool. So this is for tea. This is very easier question. This is for coffee.
So t is like both are like by 70. So approach is very simple कि आप पहले दोनों का निकाल लो. Both are 70. So uh, uh, t is 140. So if t is overall t is 140, then 140 minus the common one, that is 70, is equal to 70. And talking about the coffee, so coffee is consumed by 120. So coffee is 120 minus, again that 70 is common. So again we have to remove that 70. So it comes out as 50. So the overall calculation of people who either like coffee, tea, or both is 70, 70 plus 50 plus 70. First 70 is for tea, second 50 is for coffee, and this 70 is for the people who like both. So this comes out as 190. And we had total population of total population was 200. So just remove this. 200 minus 190 is equals to 10. That makes our option number D as our right answer. So moving to next question. This is a typical series based question, और you can expect that like दो तीन क्वेश्चन तो आएंगे on series chapter. So firstly ये थोड़ा सा अलग है, like conventional series नहीं है, wherein in a conventional series आपके सारे जो एक नंबर बोल लो या डिजिट सेट बोल लो वो सारे सेम होते हैं, बट हियर इट इज मेकिंग अ सीक्वेंस among themselves. So firstly we have four different series. So DIT, GMQ, KM, KQM, and PUH. So one thing you will notice कि सारे ही चीजें आगे जा रही हैं. फर्स्ट वर्सेस फर्स्ट करेंगे अगर, फर्स्ट लेटर वर्सेस फर्स्ट लेटर ऑफ अदर स्टेटमेंट. सो डी, जी, then Q, sorry, K, then P. So the pattern which you can notice is that D और G के बीच में कितने letters हैं? So D and G के बीच में E and F. Then G and K के बीच में कितने letter हैं? So G, H, I and J. K और P के बीच में कितने letters हैं? So K के बाद L, M, N and O. So through this, like you can notice a pattern कि हर जगह जो बीच के नंबर्स हैं, बीच के लेटर्स हैं, आर इंक्रीजिंग बाय वन. यहाँ पे दो लेटर थे, यहाँ पे तीन लेटर है, यहाँ पे फोर लेटर है. सो कंटिन्यूइंग दैट वी कैन कंक्लूड दैट पी के बाद यहाँ पे क्यू होगा, आर होगा, एस होगा, टी होगा एंड यू होगा. सो नेक्स्ट लेटर विल कम आउट एज वी. सो नाउ वी कैन कंपेयर इट विद द ऑप्शन. सो ऑप्शन में ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी कंप्लीटली रूल्ड आउट हो गए बिकॉज in both the statement, V is not the first letter. Let's move to the next middle letter of each statement. So first है I, then second में है M, then third में है Q, and then fourth में है U. So here you will notice that कि इनके बीच में कितने लेटर हैं? I के बाद J, then K, then L.
एम के बाद कितने लेटर्स हैं? MNOP। क्यू के बाद कितने लेटर्स हैं? ST। सो यहाँ पे तुम पैटर्न नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे जो बीच के डिफरेंस है इज कांस्टेंट। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है। सो यू के बाद VWX। सो बाय दैट वी कैन कंक्लूड दैट द नेक्स्ट लेटर विल बी Y। सो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तुमको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए किया है, बट ऑल यू कैन डू इज जस्ट रिमेंबर द नंबर अगेंस्ट दिस लेटर्स। लाइक आपने ये देखा होगा A B C D। So A is the first letter, then B is the second letter, then C is the third letter. So इस तरह से आपको याद होना चाहिए। R का है 18। कॉन्स्टेंटली लाइक रैंडमली कुछ भी अगर पूछा जाए, सो यू मस्ट रिमेम्बर कि इसका एसोसिएट नंबर क्या है, सीधा भी उल्टा भी। तो उल्टा अगर गिनेंगे तो ए जो है वो 26 आएगा, फिर बी का 25 इन रिवर्स ऑर्डर, सी का 24। सो अगर ये याद है आपको, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द सीरीज। और ये सारा कुछ आप ओरली कर सकते हो विदाउट यूजिंग पेन, राइट? कूल। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So Ram traveled toward east from his office. So again, it is very easy question. So Ram traveled towards east. So first thing you should remember in this kind of question is कि वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अपने को नॉर्थ कौन सा लेना है और साउथ कौन सा लेना है। सो जस्ट बी वेरी क्लियर कि इंडियन मैप हमें फॉलो कर लेना है। यू कैन डू एनीथिंग बट आई सजेस्ट यू टू डू दिस, एंड दिस बिकम्स योर नॉर्थ, दिस बिकम्स योर साउथ। जस्ट रिमेंबर दिस, इट मेक्स योर कैलकुलेशन लेटर इजियर बिकॉज कंफ्यूजन बहुत कम होता है। हमने देखा हुआ है बचपन से कि नॉर्थ इज कश्मीर, साउथ इज तमिलनाडु, so it becomes very easy. This is east and this becomes our west. So अब Ram traveled towards east from his office. So just make a line. Ram traveled towards east. And it is 10 kilometer. After traveling 10 kilometers, so it is 10 kilometer. So after traveling 10 kilometer, he took right turn and covered 2 kilometer. So then he took right turn for 2 kilometer. अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली है कि अगर ये 10 किलोमीटर है सो इट मस्ट बी लॉन्गर, अगर ये 2 है तो ये छोटा होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपको एग्जैक्टली मेजर करना है कि ये सेम हो, बट स्टिल ये बड़ा है तो आप उसे बड़ा दिखाओ, ताकि अगर नॉर्थ ईस्ट या कुछ भी ऐसे डायरेक्शन रहे तो यू कैन इजीली गेस। अगर आप दोनों को इक्वल कर दोगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा काम करेगा, एंड देन योर आंसर माइट बी रॉन्ग। So then he covered 2 kilometers. So 2 kilometers. Then he took 45-degree turn clockwise. So he was traveling in this direction. Then he took 45-degree turn. Means he must uh, took turn in this direction because he was heading towards south. अब वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेगा तो वो ऐसे जाएगा and travels for 3 kilometers. So must be this, and traveled for 3 kilometers. So now they are asking in which direction is he traveling now. So easy enough. He is traveling towards southwest. This is our south, and this is our west. So option C becomes our right answer. Moving to next question. So at 3 o'clock, okay, so firstly, just visualize a clock. No need to draw for you guys.
Like in exam scenario, don't go to draw such silly thing. Save time there. So at 3 o'clock, if the hour hand points towards west, so again यही वाला डायरेक्शन आपको याद रखना है. सो इफ आवर हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेस्ट, सो यहाँ पे आपके 3 बजे हैं. कूल. इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 7:45. सो आपको पता है यहाँ पे अगर 3 हो रहे हैं तो यहाँ पे 9 होने वाले हैं. तो आपका यहाँ पे 9 है. एंड जब वो घड़ी की सुई 9 पे होती है, सो वी काउंट इट एज 45. सो अगर ये वेस्ट था, 3 वेस्ट था, तो 9 ईस्ट होगा. सो ऑप्शन बी बिकम्स अ राइट आंसर. Moving to next question, question number 27. So again, it is assertion reasoning question. तो यू नीड टू फाइंड आउट कि ये जो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दे आर रिलेटेड, और अगर रिलेटेड है तो असर्शन का जो रीजन है वो करेक्टली रीजन में स्पेसिफाई किया गया है या नहीं किया गया है. यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और दोनों रिलेटेड भी हो सकते हैं, बट उल्टे हो सकते हैं. सो जस्ट टेक केयर कि आप असर्शन और रीजनिंग के ऑप्शन से ही सिलेक्ट करो. इवन आफ्टर फाइंडिंग आउट द राइट आंसर, समटाइम students mark wrong because they don't read A and R correctly. So just be careful about that. So money can resolve most of our problem. So yes, this is true. Money can resolve most of our problem. The reason given is we are living in a hierarchical society. So yes, we are living in hierarchical society, but ये दोनों रिलेटेड नहीं लग रहे. द रीजन बीइंग कि ठीक है, सोसाइटी में हिरार्की है, बट उससे मनी कैसे रिजॉल्व कर रहा है अपना प्रॉब्लम, राइट? सो दोनों ट्रू है, बट दोनों इंडिपेंडेंट है. दोनों कुछ भी आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों अपने अपने में बात कर रहे हैं. सो just choose the option wisely. So option A states both are correct. That's true. And R is the correct explanation of A. That is wrong because R is not a correct explanation. Moving to option B. So both A and R are correct, but R is not a correct explanation. So this is the exact answer which we are looking for. So option B becomes our answer. Moving to next question. So we have to complete the series. Again, this is very basic series. अब यहाँ पे मैं पेन भी नहीं यूज कर रहा, जस्ट मतलब इतना इजी है ये. तो FAQ. नाउ इन सीरीज मूविंग अहेड व्हाट दे आर डूइंग इज कि F को उठा के आगे रख दे रहे हैं, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे. तो AFQ. सो अब फॉलोइंग द सेम पैटर्न, नेक्स्ट क्या हो सकता है? सो अब A को उठा के आगे रख देंगे, सो होगा QFA. सो QFA इज इन ऑप्शन नंबर B. So option B becomes a right answer. Moving to next question. So B, C, D, E, G, H are the 6 persons sitting in a row, not necessarily in the same order. 2 persons are sitting between C and G. Cool. C is placed immediately to the left of B. So immediately left. C is immediately left of B. Okay. Sorry, they are in row. So C and B. Okay. C is placed immediately to the left of B. And again, in this question, I am assuming that all are looking towards north. क्योंकि मैं नॉर्थ में बैठा हूँ और मुझे मतलब मेरे हिसाब से मैं आगे देख रहा हूँ, तो मैं नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा हूँ. सो आई एम अज्यूमिंग ऑल आर
हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और उसी हिसाब से वी आर सॉल्विंग। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप अज्यूम कर सकते हो कि आप साउथ में बैठ, आपका फेस साउथ की तरफ है, तो आपका बी और सी होगा, मेरा सी और बी है। सो बट आई प्रेफर टू गो with the flow of north, heading towards north. So C is placed immediately left of B. D is the first one in the row. D is the first one in the row. Cool. हमें इनके बीच में कौन है क्या है कुछ नहीं पता. C and H are not sitting together. Cool. Which one of the following represent the correct arrangement sitting order? So here, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, सो यू कैन यूज दिस ऑप्शंस, एंड ऑल्सो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस ट्रू है, सो दैट टेल्स यू दैट इसका कोई राइट आंसर आने नहीं वाला. सो जस्ट आपको जितने भी यहाँ पे कंडीशंस दिए हैं दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड, और इसके हिसाब से जो भी आपका ऑप्शन बन रहा है दैट यू कैन मार्क. सो गोइंग विथ ईच ऑप्शन. सो डी फर्स्ट है, तो डी सब में फर्स्ट है, सो वी कैन इग्नोर दैट. देन टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड जी, तो सी एंड जी के बीच में टू पर्सन आर सिटिंग, यस. सी एंड जी के बीच में टू पर्सन आर सिटिंग, यस. Yes, and this is true for here as well. Cool. C is placed immediately to the left of B. C is placed immediately to the left of B. तो यहाँ पे ये straight away wrong हो रहा है. Let me, यहाँ पे straight away wrong हो रहा है because उल्टा बैठा हुआ है यहाँ पे. C is left of B. Yes, this is right. C is left of B. C is left of B. So we can rule out the option number A. Option B, C, D are still in the race. So cool enough. So D is the first. Okay. C is not immediately. Okay. So C and H are not together. So here C and H are not together. Here C and H are not together. But here C and H are together. So easily we can rule this out as well. So B and C are the correct. And yes, this is our answer. Also, it is like basic common sense question wherein ज़्यादा मीन्स जस्ट कॉमन सेंस यूज करके भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो 144 related to 77 in the same way as 168 is related to what? सो जैसे ही आप इन दोनों नंबर को देखोगे सो यू कैन इजीली कंक्लूड कि ये कहीं तो डबल जैसे हो रहे हैं. 77 और 144 डबल जैसे हैं. सो 144 divided by 2 is 72, and 77 is 72 plus 5. Cool. So this is the relationship. We can do this for 168 as well. So 168 divided by 2, which is 84, and 84 plus 5 is 89. So option D becomes our right answer. Moving to the next question. So a device classifies numbers according to the following criteria. Cool. So again, it is very common sense based question, जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस में कुछ नंबर दिए हैं और यहाँ पे उसके लिए कुछ कंडीशंस दी है. सो वन ऑफ दिस नंबर विल satisfy all the condition. So the number has 5 digit. So all the number has 5 digit. Cool. First and the last digit are a perfect square. Okay. So first and last. So 1 is perfect square, 4 is perfect square, 9, 4, 4, 9, 9.
Cool. So every number are perfect square. Every first and last number are perfect square. So the middle digit is an odd number, and it is a addition of first and last digit. So middle number is odd number. So 5 is an odd number, and 1 and 4 are addition. Okay. Then B, uh, 5 is an odd number, but 9 and 4 are not the addition. Okay. 9 is an odd number, but again, 9 plus 4 is 13. So ruled out. The same scenario here as well. 5 is an odd number, but 9 plus 4 is 13. So we are left with the only option, that is option number A. That is our answer. Moving to the next question. Question number 32. So square, okay, circle is circumference. So circle is circumference. अब circle है, इसमें circumference क्या है? So circumference is the, ये जो जितना भी पूरा बॉर्डर है उसका जो भी लेंथ है, that is the circumference of a circle. So we need to find the exactly same relationship. So square and area. So when we talk about square, so ये square है. What is area? So area is something inside, like ये सबका addition. That is not making the exact same relationship. So option number A is ruled out. Cylinder and volume. Again, cylinder and volume are the same as square and area. जहाँ पे सिलेंडर का पूरा इनसाइड एरिया ही हमें पूछ रहा है. So this is not same as circle and circumference. So again, option B is also ruled out. Moving to option C, that is rectangle and perimeter. So considering this as a rectangle only, so perimeter is the addition of all the sides. This, and this side. So yes, ये भी outer surface का पूरा addition मांग रहा है, ये भी outer surface का पूरा addition मांग रहा है. So both circle and circumference and rectangle and perimeter have the same relationship. So option C becomes the right answer. Moving to the next question. So again, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई पैटर्न नहीं मिल पाएगा. यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ कि आपको ये पता हो तभी आप इससे आंसर निकाल सकते हो. अदरवाइज इफ कुछ ऐसा पूछा है उसने कि जो आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो, इट कुड बी फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, लाइक यहाँ पे वो एग्रीकल्चर बेस पूछ रहा है, कई बार वो मेडिकल बेस पूछ सकता है, एस्ट्रोनॉटिकल बेस पूछ सकता है, मैथमेटिकल पूछ सकता है. सो इट कुड बी एनीथिंग. सो जस्ट यू नीड टू बी लकी कि आपको पता हो कि वो क्या रिलेशन निकालना चाह रहा है. सो हियर, like all other vegetables are grown above the ground, whereas potato inside the ground. So ये basics are मतलब इनका लॉजिक है, and on that basis potato is our answer. It is odd one out. Moving to the next question. So 6 students P, Q, R, S, T and U are sitting around a hexagonal table, each at one corner and facing towards the center of hexagon. P is second left. Okay. So let's assume P anywhere. अब क्योंकि ये हेक्सागोनल है तो इतना फर्क नहीं पड़ता कि मतलब इसमें कोई सर्कल या कुछ ऐसा नहीं है, रो नहीं है कि फर्स्ट कौन होगा. Give me a minute. So this is our hexagonal table. So P is second left of U. So we can consider P को here. So it is second left of U. So U must be here. Q is neighbor of R and S. Q is neighbor of R and S. So अगर Q अपन यहाँ पे रख रहे हैं तो उसके नेबर R and S नहीं होंगे. यहाँ पे रख रहे हैं तो उसका नेबर
एक आर या एस होगा बट दूसरा पी होगा। और यहाँ पे भी सेम, अगर यहाँ पे क्यू को रख रहे हैं तो उसका एक नेबर यू होगा, दूसरा आर एंड एस हो सकता है। सो क्यू के लिए एक ही स्पॉट है, दैट इज दिस। सो क्यू यहाँ पे है, सो क्यू इज नेबर ऑफ आर एंड एस, तो इट कुड बी इधर आर और एस। सेम दिस कुड बी इधर एस और आर। Who is on the right of R? Okay, so again, P is second left of U. T is second to the left of S. So T के लिए एक ही space है, that is this one. And T is second to the left of S. So यहाँ पे R रहेगा, यहाँ पे S रहेगा, यहाँ पे T रहेगा. Cool. So who is right of R? So R यहाँ पे है, R का right is P. So option B becomes our answer. Moving to the next question. So we need to complete this series. Okay. So firstly, by observing this series, we can conclude that 24/48 is 2x. So this could be 36, and then this must be 60. But the problem with this series, like there are two problems. So first is कि जो fourth अपना sequence है वो 60 नहीं है, that is 63. So that is proving that this assumption is wrong. And second is कि कभी होता है कि आपका लॉजिक सही जा रहा है बट जो एग्जामिनर है उनका लॉजिक आपके लॉजिक से थोड़ा डिफरेंट है। सो वहां पे दो ऑप्शन राइट ना हो, इसलिए द ऑप्शन दैट दे आर गिविंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। सो यहाँ पे 36 ऑप्शन में ही नहीं। सो फ्रॉम दैट यू कैन कंक्लूड दैट इवन अगर फोर्थ स्टेटमेंट 60 होता, अगर ये 60 होता एंड यहाँ पे आपका ऑप्शन 36 नहीं है, ऑप्शन ए बी सी डी में आपका 36 नहीं है, सो इजिली यू कैन कंक्लूड कि एग्जामिनर का लॉजिक को दूसरा है एंड यू कैन start thinking from a different angle to get either of the option from the series. So it is a very good uh, tool for a examiner to give you a hint कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है. We have a different logic behind this. So चलो, this is like very easier one. So one thing that I can observe is 25 के पास एक स्क्वायर आता है, 48 के पास एक स्क्वायर आता है एंड 63 के पास एक स्क्वायर आता है. सो 24 के पास जो स्क्वायर आता है इज 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 minus 1 is 24. देन 48 का इज 48 का 7 का स्क्वायर इज 49 minus 1 is 48. देन 63 is 8 का स्क्वायर is 64 minus 1 is equals to 63. So easy to guess. This is 6 का square, which is 36 minus 1 is 35. So option A becomes our answer. Moving to the next question. So this is basic blood relation type of question. So blood relation में you must be having some symbols for gender and relation. तो मेरे अलग हो सकते हैं, यू कैन हैव योर ओन, और मैं वही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कंफर्टेबल हो दूसरे सिंबल्स के साथ, सो गो अहेड विद दैट. सो फॉर मी आई यूज सर्कल फॉर फीमेल एंड a square for male. So A is a sister of B's father-in-law. ठीक है. So B यहाँ पे है, B यहाँ पे है
और बी के फादर इन लॉ मतलब बी का कोई तो एक स्पाउस है, का एक स्पाउस है, डोंट नो हु इज दैट, एंड उसके फादर इन लॉ, सो इसके एक जनरेशन अप, सो इसके फादर, दैट इज सॉरी फादर इन लॉ, सो जेंडर इज वेरी मच स्पेसिफाइड कि जो फादर इन लॉ है इज अ मेल, ओके, एंड he have a sister that is A. So sister A. Okay, and for sister I use this line. For spouse I use this line. For generation up, simple straight line works. So A and C are siblings. Okay, still we are not clear with that. D is a husband of B, so that makes B as wife. And if D is a husband, D is a husband. Okay, of B. How D is related to A. Okay, so D is a aunt. Like A is a aunt. So option C becomes our answer. Moving to the next question. So question number 37 also talks about the assertion and reason. Cool. So let's move ahead. So assertion that they are saying is that the 10th class result is very poor this year. Okay. ठीक है. The reason, first reason that they are giving is कि number of students in 10th class have increased considerably. Okay. So अगर number of students in any class increases, so क्या ये कैसे भी linked है to the very poor result of that class? So no. So R1 is not a correct reason for assertion. Moving to R2. So the students of 10th class belongs to different section of society. अब यहाँ पे रिजल्ट पुअर है मतलब बच्चे पढ़ नहीं रहे या पढ़ा नहीं पा रहे, जो भी रीजन है, बट उससे डिफरेंट सेक्शन कहाँ से आ रहा है? सेक्शन इज कंप्लीटली सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है यहाँ पे. सो R1 एंड R2 दोनों ही करेक्ट रीजन नहीं है फॉर द असर्शन, दे आर इंडिपेंडेंट. सो ऑप्शन सी बिकम्स आवर आंसर. To the next question. So Suraj walked 6 meter facing towards west. So again अपन वही मैप अपना फॉलो करेंगे जहाँ पे नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट वेस्ट, लेफ्ट राइट. सो हाँ, so Suraj walked 6 meter facing towards west. Then he took left turn and walked 8 meter. अब 6 और 8 में थोड़ा सा एक लंबा होगा और थोड़ा छोटा होगा. सो आपको एग्जैक्टली सेम मेजर नहीं करना, बट यू नीड टू बी श्योर कि 8 मीटर वाला थोड़ा सा लंबा हो. ठीक है. 8 मीटर. देन ही टुक, सॉरी, देन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 8 मीटर. देन ही टुक राइट टर्न. ओके. तो जब वो साउथ में वॉक कर रहे हैं तो उसका राइट ये होगा. एंड वॉक 6 मीटर. सो लमसम वो, सॉरी, लमसम वो 6 मीटर इतना होगा. Then he walked 10 meter in northeast direction. So north ये है और ईस्ट ये है. So 10 meter should be this. अब यहाँ पे one thing is very clear कि let me write it as well कि अगर ये 8 है, अगर ये 6 है, तो according to the right angle triangle
आपका ये वाला लाइन 10 होगा। सो सिंपली वो वहीं पे पहुंच गया जहां पे वो 6 मीटर आगे चला था। सो दिस इज 10, this is 10 and this is 6. Okay. Approximately how far he is from the starting point? So answer is 6. Option C is the right answer. Moving to the next question. You get now why C? Because he has reached again at the same spot from where he took the first left turn. So यहाँ से this spot से this spot. This is the only distance जो अभी है. So option C is our answer. So it's a coding decoding. Okay, so in a language, this means less than, hash means greater than, asterisk means equals to, and okay, so there are three symbols. So A is less than, A is less than B, C is C is equal to D. I'm just encoding it, nothing else. C is C hash B, C is greater than B. C is greater than B. So which is true? So again, we have to encode the options as well. So D, A. D is less than A. So D is less than A. Is it true? So what we can do is we can combine all of this in a single statement. जहाँ पे अगर C B से भी बड़ा है तो C is equals to D. So just we have amalgamated all the statements. Nothing very special. ओके सो डी जो है यहाँ पे वो सीधा उल्टा रिकमेंड कर रहा है, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. बी हैश डी, सो बी इज ग्रेटर देन डी, बी इज ग्रेटर देन डी. अगेन हमारे यहाँ सबसे बड़ा सी और डी है, देन ई सबसे छोटा है, सो बी इज ग्रेटर, सो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. A asterisk C, A is equals to C, A is equals to C, so no, is not equal to C. Then A is less than, B is less than C. This is exactly what we were talking about. So option D becomes the right answer. This is exactly same as this. To the next question. So again, this is a family relation question wherein A, B, C, D, E, and F are 6 members in a family. A is mother of B. So A is mother of B. So we don't know the gender of B. We just know that A is a mother, but we don't know the gender of B. A is a mother of B, who is the husband of D. Okay, so we got the gender of B as well. So B is husband of D. So D must be wife. This is D. And I'll note the relationship with this. Okay. F is brother of one of the parent of C. One of parent of C. So we don't know where F and C came. So we can ignore it for now. D is daughter-in-law of E and has no sibling. E is daughter-in-law of D is daughter-in-law of E. Okay. So E is husband of A. Why? Because ये डॉटर इन लॉ ये ए की भी है, और अगर वो बोल रहा है कि ई की भी डॉटर इन लॉ ही है, सो ए एंड ई आर मैरिड. और अगर ए
women है, so E would be men. So this is E, and they have the same common relationship. This one, okay, and D don't have any sibling. D is a daughter-in-law of E and has no siblings, so D don't have any sibling. C is son of D. Okay, so again, the same relationship. C is son of D. C is a son. Okay, C is son of D, and they are asking about F. We left the F. F is the brother of one of the parent of C. One of the parent of C. So F यहाँ पे आएगा, और F अगर ब्रदर है तो वो F B का ब्रदर होगा. Cool. हाला ये जरूरी नहीं था to find out the relation of F, but still we have did it. So how is C related to A? So C related to A. So C is a grandson of A. So option number B is our answer. So with this, we have concluded the logical reasoning section of Cmat 22 paper. And then we will be covering with English section as well in the next video. Till then, stay tuned. Thank you.